Hello aspirants and welcome to EduMiles Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 15 February of 2023. For most of the materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article for the day is about a position in the Indian polity, which is known as the Deputy Speaker. So the news says the Supreme Court has issued notices to the centre and 5 states, Rajasthan, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Jharkhand, over the failure to elect a Deputy Speaker. So news बहुत simple है. The centre and this particular 5 states, because यहाँ पे जो Deputy Speaker का position है, it has been lying vacant for quite some time now. So this is the reason why the Supreme Court has written or has issued notices to these particular states and the centre. Okay, so यहाँ पे जो भी सारा facts हम देखेंगे, it can be important for our prelims, and we'll try to have some knowledge about the position of Deputy Speaker, about his functions, which can be important from mains GS paper to Indian polity point of view. It has been taken from the Indian Express. So we'll first discuss about the background of this particular position, that is the Deputy Speaker. So if you look at the history of Deputy Speaker post, the institution of Speaker and the Deputy Speaker in the Indian polity, you will find that they have originated in 1921 under the provisions of the Government of India Act of 1919. So ये जो positions है, they have been brought about by the British Indian government through the Government of India Act of 1990, which is also known as the Montagu-Chelmsford Reform. Okay, अब ये 1921 when these positions were basically introduced, तो यहाँ पे जो पहले स्पीकर थे, ठीक है, जो पहले स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर थे, they were Frederick White and Sachidanand Sinha respectively. ठीक है, so they were appointed by the Governor General. तो उस टाइम में हम Governor General of India को we called him as the Viceroy. So the Viceroy appointed the Speaker and Deputy Speaker of the Central Legislative Assembly. ठीक है, लेकिन उस टाइम यहाँ पे बस डिफरेंस यही है, जो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर टर्म्स है ना, नाउ वी डिड नॉट यूज द टर्म स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ड्यूरिंग दैट टाइम. तो ये जो पोजीशंस है वो यूज टू कॉल देम एज द प्रेसिडेंट एंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. ठीक है, सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे फ्रेडरिक व्हाइट एंड सचिदानंद जो है, इवन दो देयर पोजीशन इज सेम एज दैट ऑफ द स्पीकर ऑफ करंट टाइम, बट जो पोजीशन है उसका नाम क्या था, द स्पीकर, सॉरी, इट वाज प्रेसिडेंट एंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. ठीक है, एंड दिस नेम्स, दिस नोमेनक्लेचर कंटिन्यूड इन 1947 एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस ओनली वी हैव अडॉप्टेड दिस टर्म स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट positions with respect to the Lok Sabha or the State Legislative Assembly. Okay, so G.V. Mavalankar and Anantha Sayaman Iyengar so had the distinction of being the first speaker and the first deputy speaker respectively of the Lok Sabha. So this you can see as the picture of Ganesh Vasudev Mavalankar. So he was the first speaker, that is after independence. Okay, so Lok Sabha ka first speaker, if you have been asked, so the answer will be G.V. Mavalankar, and the first deputy speaker of the Lok Sabha was A. Iyengar. All right, and the current times का हम बात करेंगे of the current लोक सभा के बारे में, इट इज ओम बिरला इज द करंट स्पीकर ऑफ द लोक सभा. इट इज नॉट डेप्यूटी स्पीकर, याद रखिएगा, इट इज स्टिल वेकेंट. इट इज ओम बिरला हु इज द करंट स्पीकर ऑफ द लोक सभा. Now let's look at the constitutional provisions with respect to the office of the deputy speaker. तो अभी देखिए, एग्जाम में आपको कभी पूछेगा कि ये जो पोजीशन है ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर, हैज इट बीन मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, यस और नो. आपको कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन ऑफन हैज बीन आस्क्ड, फॉर एग्जांपल द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या मान लीजिए द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर. तो यहाँ पे जो ये पोजीशंस है, आर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, यस और नो. ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे डेप्यूटी स्पीकर के बारे में, सो आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द हाउस ऑफ द पीपल, दैट इज द लोक सभा इन इंडियाज केस, शैल चूज 2 members of the house, that is of the Lok Sabha only, to be respectively speaker and deputy speaker. A very important point, because through this article 93 we understand that deputy speaker and both the speaker and deputy speaker, these are constitutional positions. All right, so speaker and deputy speaker, you will find mention about them in article number 93. The article also says that when the office of the speaker or the deputy speaker becomes vacant, the house shall choose another member to be speaker or the deputy speaker. ठीक है, तो similarly for the state legislative assembly के बारे में, तो ये जो बात हमने ये जो कहा था अबाउट आर्टिकल 93 के बारे में, दिस वाज विद रिगार्ड टू द हाउस ऑफ पीपल, दैट इज द लोक सभा ऑफ द पार्लियामेंट. द सेम पोजीशन इज आल्सो एप्लीकेबल इन द केस, दैट इज स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर इज आल्सो एप्लीकेबल इन द केस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रू आर्टिकल नंबर 117. ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 93 फॉर द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर एट द सेंट्रल लेवल एट द लोक सभा, एंड आर्टिकल 178 फॉर द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट्स. ठीक है, नाउ दे कंटेन द corresponding position for speaker and deputy speaker. And now if you look at the election of the deputy speaker, तो you should know, like the speaker and deputy speaker का जो election है, ये काफी similar है. यहाँ पे the people not directly vote in the elections. तो like the speaker, deputy speaker is also elected by the Lok Sabha itself from amongst his members. ठीक है, तो यहाँ पे बस कुछ एक simple majority से उनको elect किया जाता है from amongst his member only. He is elected after the election of the speaker has taken place. तो पहले यहाँ पे election होगा speaker का, उसके बाद the election for deputy speaker will take place. ठीक है, the date of election of the deputy speaker
स्पीकर इज फिक्स बाय द स्पीकर ओनली, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे तो स्पीकर जो है, स्पीकर का जो इलेक्शन है तो उनका जो डेट होता है तो दैट इज बीन डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, और डेप्यूटी स्पीकर का जो इलेक्शन का डेट है इट इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर हिमसेल्फ। एंड इफ यू लुक एट द टर्म ऑफ द ऑफिस, तो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर का भी यहाँ पे कहानी सेम है, दैट इज दे रिमेन इन ऑफिस यूजुअली ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन अबाउट देयर टर्म, बट दे बेसिकली एक्सरसाइज देयर पावर, दे रिमेन द ऑफिस टिल द लाइफ ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो जैसे लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, द पोजीशन ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर दिस आल्सो डिसॉल्व्स। हाउएवर ही मे वेकेट हिज ऑफिस, अगर मान लीजिए कि लोकसभा के डिसॉल्विंग से पहले से भी दे कैन वेकेट हिज ऑफिस अर्लियर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग 3 केसेस, ठीक है। तो ये बात हो रहा है डेप्यूटी स्पीकर के बारे में। तो डेप्यूटी स्पीकर ceases to be a member of the Lok Sabha, अगर मान लीजिए कि कोई भी कारण से if he or if the speaker, ठीक है, I'm sorry, the deputy speaker if he ceases to be a member of the Lok Sabha, in that case he won't be continuing as a speaker. If he resigns by writing to the speaker, याद रखिएगा ये स्पीकर का जो पोजीशन है, the speaker in order for his resignation he would have to write to the deputy speaker, यहाँ पे his resignation submit करेंगे to the speaker. You should also know that the speaker can resign earlier by writing to the deputy speaker of the Lok Sabha. Very important fact, the speaker will submit his resignation to the deputy speaker, the deputy speaker will submit his resignation to the speaker, ठीक है। If he is removed by the resolution passed by a majority, तो इनको रिमूव भी किया जा सकता है by a resolution passed by a majority of और the 10 members of the Lok Sabha. Such a resolution, अगर मान लीजिए कि ऐसा resolution अगर पास करना है, it can be only moved after giving 14 days prior notice to the deputy speaker. And finally, if you look at the role and the power of the deputy speaker performs the duties of the speaker's office when it is vacant, ठीक है। तो you'll find जो यहाँ पे powers, जो functions है ना, they're not different, ठीक है। तो the same functions of the speaker are only applicable to the case of the deputy speaker, but only in his absence, ठीक है, only when the post is lying vacant, all right। So he also acts as the speaker when the letter is absent from the sitting of the house. तो अगर कोई भी particular sitting में if the speaker is not being present, then the deputy speaker will be act under the capacity of the speaker only. In both the cases, he assumes all the powers of the speaker. तो जितना power speaker के पास है, वो सारा power deputy speaker के पास आ जाता है. It should be also noted here that the deputy speaker is not subordinate to the speaker. ठीक है, he is directly responsible to the house only. He also presides over the joint sitting. तो you must be knowing कि जब भी कोई ordinary bill मान लीजिए कि पास नहीं हुआ है, for example लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया और vice versa, तो इस केस में क्या हो जाता है, according to article number 108, so we can call for a joint sitting of the parliament. ठीक है, not we but the president can call. ठीक है, so the president basically can summon a joint sitting of the parliament जहाँ पे जो deadlock है, deadlock can be resolved. तो ये deadlock जब भी resolve करने के लिए जब एक joint sitting को invite किया जाता है, जब summon किया जाता है, उस केस में जो speaker है ना, the speaker acts as the you will find he acts as the presiding officer of the particular joint sitting. In that case अगर वो absent है, in the case of the speaker is absent from such a sitting, then the deputy speaker will preside over the joint sitting of both the houses of the parliament. The deputy speaker has one special privilege है उनके पास, that is whenever he is appointed as a member of the parliamentary committee. तो जब भी उनको कोई भी parliamentary committee का as a member choose किया जाता है, जब भी उनको select किया जाता है, then he automatically becomes its chairman. ठीक है, very important fact. And also when the speaker presides over the house, the deputy speaker is like any other ordinary member of the house, because as I told you, ये speaker he is none other than a member of the house only. ठीक है, so जब speaker position पे है, when the speaker का जो position है, when it is not vacant, when it is not absent, इस case में the deputy speaker का जो position, he would be acting like a normal member of the parliament only, or member of the legislative assembly in the case of the state. You can also speak in the house. अगर मान लीजिए कि like while being a deputy speaker, जब वो speaker नहीं है, he can speak in the house, participate in this proceeding and also vote on any question before the house. अभी हम बात करेंगे कि whether or not it is necessary to have the position of the deputy speaker. ठीक है, deputy speaker का जो position है, क्या हम उसे vacant रख सकते हैं या नहीं रख सकते, उसके बारे में हम बात करेंगे. So the experts of the constitution point out that both article number 93 and 178. तो as I told you कि 93 में आपको मिलेगा speaker, deputy speaker of the parliament of the Lok Sabha, and 178 you will find the speaker in the Lok Sabha of the legislative assembly. तो यहाँ पे लिखा गया है use the word shall. ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि shall यूज किया गया है, indicating that the election of the speaker and deputy speaker is mandatory under the constitution. तो क्योंकि यहाँ पे shall word यूज किया है, not may, यहाँ पे अगर may यूज करता अलग बात होता, but because it is using shall, this is the reason why election is compulsory under the constitution. In general, the practice in both the Lok Sabha and the state legislative assemblies has been
हैज़ बीन टू इलेक्ट द स्पीकर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन। तो मान लीजिए कि जब भी एक नया असेंबली फॉर्म होता है, जब भी एक नया लोकसभा आप देखोगे, जब एक नया गवर्नमेंट फॉर्म होता है नया हाउस में, तो उस केस में क्या हो जाता है, जो पहला सेशन होता है ना, तो उसी में यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है स्पीकर को, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला जो सेशन होगा, तो पहला सेशन में बेसिकली जब यहाँ पे स्पीकर नहीं रहते, द हाउस वुड बी प्रिसाइडेड बाय यहाँ पे एक टेम्पोररी स्पीकर रहता है जिनको कहा जाता है प्रो टाइम स्पीकर, ठीक है। अब प्रो टाइम स्पीकर क्या करेंगे, बाय हैविंग लाइक जो भी आप हाउस को इलेक्ट करेंगे, हाउस जिनको इलेक्ट करेंगे एज स्पीकर, तो उनको अपॉइंट कर देंगे, ठीक है। और उसी के बाद से आप देखोगे स्पीकर वुड बी लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसाइडिंग दी लाइक ऑल दी सेशंस ऑफ द लोकसभा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, यूजुअली ऑन द थर्ड डे आफ्टर द वोट टेकिंग एंड अफर्मेशन, तो जितना भी यहाँ पे वोट टेकिंग है एंड अफर्मेशन है ऑन द फर्स्ट 2 days, तो थर्ड डे में यहाँ पे स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और उनको अपॉइंट यहाँ पे किया जाता है एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सिमिलरली इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर अगर आप देखोगे तो इट यूजुअली टेक्स प्लेस इन सेकंड सेशन में होता है, ठीक है। अब ये आप जान लीजिए कि दिस आर नॉट मैंडेटरी, ठीक है, दिस हैव नॉट बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दिस इज, यू कैन से दिस इज अ कन्वेंशन दैट हैज बीन फॉलोड, ठीक है। द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर जो है, इट यूजुअली, ऑलराइट, इट्स नॉट ऑब्वियसली ऑलवेज, बट इट इज यूजुअली इट टेक्स प्लेस इन द सेकंड सेशन एंड इट जनरली नॉट डिलेड फर्दर इन द एब्सेंस ऑफ द जेन्युइन एंड अनअवॉइडेबल कंस्ट्रेंट। बट अभी के टाइम में आप देखोगे देयर इज नो स्पीकर, देयर इज नो डेप्यूटी स्पीकर इन द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड द सेंटर एज वेल। So rule 8 of the rules of the procedure and conduct of business in Lok Sabha. Now this is the rule book which basically governs the proceedings of the Lok Sabha. It says that election of the deputy speaker shall be held on such a date as the speaker may fix. Okay, and as I told you, election date of the speaker is fixed by the president. The deputy speaker is elected once a motion proposing his name is carried in the house. And if you look at the response of the union government about the current vacancy in the post of deputy speaker की क्यों वैकेंसी है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना ये है that the treasury benches have maintained that there is no immediate requirement in the deputy speaker, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई requirement आया नहीं है, तो this is the reason why we are not having it, as bills are being passed and discussions are being held as normal in the house, ठीक है। सब यहाँ पे नॉर्मली चल रहा है, तो उनका कोई यहाँ पे अभी तक देखोगे there is no immediate requirement for deputy speaker now. A minister argued that there is a panel of 9 members है, ठीक है, तो देयर इज अ पैनल ऑफ 9 मेंबर्स जहां पे सीनियर एक्सपीरियंस एंड सिलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज हु एक्ट एज चेयरपर्सन टू असिस्ट द स्पीकर टू रन द हाउस, ठीक है। तो ये जो स्पीकर है, तो स्पीकर को असिस्ट करने के लिए देयर इज अ बेसिकली यहाँ पे एक पैनल होता है, तो पैनल जो होता है इसमें लाइक इट कंटेन्स मेंबर्स नॉट लेस देन 10, ठीक है, आई एम सॉरी नॉट मोर देन 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10 जैसे मेंबर्स रहते हैं, तो इन दिस केस करंट सिचुएशन में देयर आर 9 मेंबर्स, तो 9 जो मेंबर्स है देयर आर सीनियर मेंबर्स एक्सपीरियंस एंड आल्सो सिलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्टीज। अब इन द केस यहाँ पे जब भी मान लीजिए कि स्पीकर when he is not in the like when he is not playing the role of a speaker, then यहाँ पे कोई भी मेंबर को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। So under the rules of the Lok Sabha, the speaker nominates from amongst the members a panel of not more than 10 chairpersons, ठीक है, और any of them can preside over the house in the absence। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे स्पीकर एब्सेंट है, देन यहाँ पे जो 9 मेंबर्स है, तो 9 मेंबर्स में से anyone can preside the house of the लोक सभा, ठीक है। सो इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, काइंडली आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द माइक्रो एलईडी, ठीक है। तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एलसीडी, एलईडी, देन ओएलईडी, ठीक है। तो करेंटली वी हैव गॉट दिस न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड माइक्रो एलईडी। तो ऑब्वियसली द टाइम्स आर चेंजिंग, द टेक्नोलॉजीज आर एडवांसिंग, ठीक है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। द न्यूज सेज दैट एप्पल, you must have heard about the company, is reportedly working on a new display technology called micro LEDs, which is considered the next big thing in the display industry, ठीक है। So currently हम जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, it is LED और OLED, ठीक है। तो अब जो एप्पल है, एप्पल इज बेसिकली डूइंग इट्स रिसर्च पार्ट, so that the upcoming devices it can like incorporate this particular LED device, the micro LED, so which can be important for our prelims and also it can be important from our main GS paper, the science and technology point of view. It's been taken from the Hindu. So micro LEDs के बारे में जानेंगे हम। Now they are self-illuminating diodes that have brighter and better color reproduction than the organic light emitting diode. So biggest advantage आप यहाँ पे देख सकते हो, these are self-illuminating in nature, which have got brighter and better color reproduction, ठीक है। तो हम अभी जो organic LED यूज करते हैं, तो उससे काफी आप देखोगे brighter है plus better color भी है। So micro LED technology is based on the use of sapphire use होता है यहाँ पे, which are known for their ability to shine on their own indefinitely, ठीक है। तो sapphire जो है, now they can
shine on their own indefinitely. Now this is the reason why they help in the, you can say, in the brighter and the better color reproduction. The technology involves the use of tiny light emitting diodes that are packed tightly together to create a bright and high quality display. ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी light emitting diodes है, the tiny ones, because they are micro in nature, तो इसीलिए उनको bundle में ऐसे पैक किया जाएगा to create a bright and light quality display. अनलाइक ये OLED डिस्प्ले, OLED डिस्प्ले में क्या होता है देखिए, यहाँ पे एक ऑर्गेनिक लेयर है, ठीक है, एज आई टोल्ड यू इट इज ऑर्गेनिक एलईडी. ऑर्गेनिक एलईडी में ऑर्गेनिक लेयर इज सैंडविच बिटवीन द एनोड एंड द कैथोड. ठीक है, इस केस में लेकिन माइक्रो एलईडी डिस्प्लेज यूज इनऑर्गेनिक मटेरियल सच एज गैलियम नाइट्रेट. ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिक मटेरियल यूज नहीं कर रहे. माइक्रो एलईडी इज एज स्मॉल एज कटिंग अ सेंटीमीटर ऑफ हेयर इनटू 200 स्मॉलर पीसेस. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना टाइनी पार्टिकल्स हैव बीन बंडल्ड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ दिस माइक्रो एलईडी. Each of these micro LEDs are semiconductors that receive electric signals as well. So once these micro LEDs are gathered, they form a module, and several modules are then combined to form screens. Right? So let's look at the benefits and challenges as well. तो पहले बताया गया है about the brighter color. As I told you, there is a better scope of color reproduction. ठीक है, so the brighter screens with better color reproduction and viewing angles as well. तो आपको पता होगा कि currently हम जो screens use करते हैं, तो कभी-कभी कोई angle से it cannot be visible, it cannot be clearly visible as well. But this particular micro LED will be suitable for viewing for different angles. Limitless scalability, as the micro LEDs display are resolution free, bezel free, ratio free, and even size free as well. ठीक है, तो basically यहाँ पे कहा गया है that they can be scaled limitlessly. The ability to freely resize the screen in any form for practical uses as well. So the semi-emissive, ये जो self-emissive micro LED है, now that individually produce red, green, and blue colors without needing backlighting or the color filters as well. Okay. And there are obviously with this benefit there are also some associated challenges with the micro LED. तो पहला बताया गया about the manufacturing complexity. Now because they are so minute in nature, because they are so tiny in nature, तो इसीलिए यहाँ पे complexities are there. The process of manufacturing micro LEDs is very complex and it requires precise control over many variables to produce high quality display. अगर हम कॉस्ट का बात करेंगे, the cost of manufacturing micro LED displays is currently very high and it may take some time for technology to become affordable in nature. All right, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात अगर आप देखोगे, the Apple, you should already know that they are like one of the costliest smartphones are being produced by them, है कि नहीं? तो अगर आप देखोगे, if they use some more cost if you find they are using some more cost sensitive devices like the micro LED, then we can expect the prices of the Apple devices to go higher in the coming times. ठीक है, अगर ये micro LED यूज करते हैं. ठीक है, and also about the power consumption, micro LEDs require a lot of power to operate, which can make them less energy efficient than other display technologies. तो इसी के लिए हमें और कैपेसिटी का बैटरी यहाँ पे जो भी हम यूज करते हैं लिथियम बैटरी, तो उसे भी अपग्रेड करना होगा. तो उस केस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं the upcoming iPhones or the Apple devices will be priced at a higher range again. The next article is about Arunachal Pradesh, where in Tawang, a day has been observed at the War Memorial, which is known as the Major Bob Khating Day. So we'll learn about him. We'll learn about the contributions of Major Bob Khating के बारे में. Okay, so this can be important for our prelims. Mains के लिए इतना important नहीं है, but फिर भी you can cite about his contributions in the modern Indian history point of view. We take it from the Arunachal Times. So about Bob Khating के बारे में, as you can see in the picture, so you should know that he was a Naga from the Manipur region से. ठीक है, he basically belonged to Ukhrul region. So Tawang celebrated Major Bob Khating Day at the War Memorial on Tuesday. So the DC of Tawang, that is Kesang Group Damo, unfurled the national flag and paid tributes to Major Rolengno Bob Khating. ठीक है, his full name is Major Rolengno Bob Khating, who consolidated the Shimla Pact of 1940. ठीक है, तो हम बात करेंगे शिमला पैक्ट के बारे में, तो जिसके दौरान में जिसके अकॉर्डिंग ये मैकमोहन लाइन हैज बीन ड्रॉन बिटवीन इंडिया एंड चाइना. ठीक है, अब ये जो पैक्ट है, इस पैक्ट को आप देखोगे, ये पैक्ट साइन करने में ही नॉट प्ले एनी रोल, बट इस पैक्ट को इंप्लीमेंट करने में, ठीक है, यू विल फाइंड दैट जो साउथ तिब्बत है, साउथ तिब्बत रीजन को इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट करने में ही हैज प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल. ठीक है, सो ही मेड तवांग एन इंटीग्रल पार्ट of India on 6th of February 1951. So this was the first celebration of its kind organized by the Indian Army's Tawang Brigade. The DC in his address conveyed that in the coming years this day can be celebrated. तो उन्होंने बताया है, he has proposed that this day can be celebrated as a Tawang Day. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 14 फरवरी जो कि कल का दिन था on 1951 में, so Major Khating for the first time hoisted the Indian national flag in Tawang, making it, तो जब जैसे ही उन्होंने unfurl किया national flag on 14 February 1951, so as soon as they did so, India basically became an integral part of the great nation.
So let's learn a little about the Shimla Pact of 1914 as well. तो हम जब शिमला का बात करते हैं, there are a number of events that actually took place in Shimla during the modern Indian history. तो यू शुड ऑल्सो नो अबाउट इंडिपेंडेंस के बाद जो यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था आफ्टर द इंडो पाक वॉर, ठीक है, दैट इज द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर. सो इंडिया एंड पाकिस्तान हैड फाइनली लाइक एक्सेप्टेड पीस टुडे शिमला एग्रीमेंट, जो कि 1972 में हुआ था, ठीक है. तो ये अलग है. और उसके बाद यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द शिमला कॉन्फ्रेंस विच इज ऑल्सो लाइक एसोसिएटेड विद द वेवल्स प्लान में, ठीक है. वो जो हुआ था इट वॉज अबाउट द इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, इट वॉज इन 1945, ठीक है. बट दिस इज अगेन डिफरेंट थिंग, ऑलराइट. So 1914 में 1972 with 1945 number of events have actually taken place in Shimla. You should be very careful in understanding these things. So in 1913 to 14 the representatives of Britain and China and Tibet had attended a conference in Shimla, India and drew up an agreement concerning the Tibet status and borders. तो देखिए इस टाइम में क्या हो रहा था यहाँ पे, you should understand कि यहाँ पे इंडिया ने साइन नहीं किया था, it was actually British India, ठीक है. So India was basically represented by the British government who was administering India at the time, and also there was representative from China and Tibet. तो उन्होंने यहाँ पे साइन किया था शिमला पैक्ट. सो द मैकमोहन लाइन गॉट इट्स सिग्निफिकेंस व्हेन इंडिया एंड तिब्बत साइंड अ कन्वेंशन एट शिमला ऑन 3 जुलाई 1914 में. तो ये जो पैक्ट है इट वाज साइंड ऑन द डे ऑफ 3 जुलाई 1914. इसी के साथ साथ यहाँ पे एक लैंड डिसाइड हुआ था, दैट्स अ मैकमोहन लाइन, ठीक है. सो फॉलोइंग दिस एग्रीमेंट देयर इज द शिमला पैक्ट का जो एग्रीमेंट है, द तवांग रीजन एंड द सदर्न पार्ट ऑफ तिब्बत, ठीक है. यू शुड नो दैट तवांग रीजन also called as a South Tibet only. Now they were considered to be a part of British India. So China considers the McMahon line illegal. लेकिन आप देखोगे ये जो you will find a number of border skirmishes and disturbed and conflict within India and China in the eastern sector of the Himalayas, that is especially in the Tawang region में. तो ये क्यों होता है? बिकॉज मैकमोहन लाइन जो है, जो कि इंडिया बेसिकली एक्सेप्ट करता है, तो एक्चुअली इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय चाइनीज गवर्नमेंट, ठीक है. तो चाइना या जो पीएलए है तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्लेमिंग दैट द टिबेटन रिप्रेजेंटेटिव्स हु हैड साइंड इन 1914. तो यहाँ पे तिब्बत को जिसने रिप्रेजेंट किया था 1914 में, हेल्ड इन शिमला, नाउ व्हिच डिलिनेटेड द मैकमोहन लाइन ऑन द मैप, वेयर नॉट हैविंग द राइट टू डू सो, ठीक है. तो उनके पास एक्चुअली ये राइट नहीं था टू साइन दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट, ऑलराइट. और उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि चाइना को जो रिप्रेजेंट किया था, आई टोल्ड यू कि ब्रिटिश इंडिया, चाइना एंड तिब्बत, तो चाइना को जिसने रिप्रेजेंट किया था दैट इज चाइनीज डेलीगेट इवान चैन. सो ही वाज आल्सो नॉट ऑथराइज्ड मेंबर ड्यूरिंग द मैकमोहन लाइन नेगोशिएशन. So this is the reason why China इसे एक्सेप्ट नहीं करता है, एंड यू ऑलरेडी नो अबाउट द वेरियस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, राइट. इस टॉपिक के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट Tamla फेस्टिवल. So the governor B.D. Mishra has conveyed the greetings of Tamla festival. Let's look at it, which can be important for our prelims, not that important for the mains, and it can be it has been taken from the Arunachal Times. So, the Governor B.D. Mishra has conveyed the greetings to the people of the state on the occasion of Tamla festival. Now, B.D. Mishra has particularly conveyed this greeting, but you should also know that already उनका farewell हो चुका है. So, he'll be soon replaced by the new governor of Arunachal Pradesh, that is Kaivalya Trivikram Parnayak. ठीक है, very important, याद रख लीजिएगा. So, ये जो Tamla festival है, it belongs to the Digaru and the Miju Mishmi communities. Very important, ठीक है. So, it belongs to the Digaru and the Miju Mishmi communities, and this was the uploaded in the Twitter handle of the Chief Minister of Arunachal Pradesh, and also on the sacred occasion of Tamla festival of our Tauran, that is Digaru, and Kaman, that is Miju Mishmi, ठीक है. तो तावरान दिगारू को कहा जाता है तावरान, एंड मिजू को कहा जाता है कमान मिश्मी ब्रिटेन्स. सो आई कन्वे माई सिंसियर ग्रीटिंग्स टू द, यहाँ पे गवर्नर ने कहा है that he has extended his sincere greetings to the people of Arunachal Pradesh. I hope that this year's festival will usher in happiness and prosperity for all, the governor said in a message. इस टॉपिक के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, काइंडली आंसर इन द कमेंट सेक्शन. तो ये क्वेश्चन था जो मैंने पूछा था लास्ट वीडियो में. लेट्स लुक एट द आंसर. सो गोल्डन थ्रेशोल्ड इज रिटन बाय सरोजिनी नायडू. देन फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है इट वाज नॉट of the INC, it was not Sarojini Naidu, it was Annie Besant. So number 1 becomes correct, number 1 becomes incorrect, and number 2 is the correct one. So यहाँ पे 2 only. There are some more questions that are asked in the previous video. Let's look at the answers. So Warang festival is celebrated by the Olo, which is a Nanga community living in Arunachal Pradesh, and also who has been appointed as the new governor of Arunachal Pradesh, as I told you, is Kaivalya Trivikram Parnayak. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining, and we'll meet the next one. Bye bye and take care.